next is now. So there are those of us who are originals, and then there are those of us who are subscribers. What is an original? What is a subscriber? A subscriber is one who hears something and makes it their truth in life. And originals are the ones who create their own truths as they go along in life. For the longest time, the bulk of mankind has been a subscriber. And then there are these originals, like this guy who one day said, "I have a dream." And that day, Martin set into motion things that would change the history of mankind. मैं अपनी जिंदगी में अधिकतर एक सब्सक्राइबर ही रहा हूँ. I come from a conservative, middle class, government service, family background. और मेरे घर में ये प्रथा है कि अच्छे लोग नौकरी करते हैं और बाकी सब बिजनेस करते हैं. Till class 12, I was a confirmed Dhakkan. And as life would have it, I went to college and I went to hostel and I went to engineering college hostel. So for those of you who are uninitiated, motto क्या होता है engineering college में? Hunt and kill the weak. Survival of the fittest. मुझे आज तक याद है मेरी पहली दारू पार्टी थी और they asked me, "What will you drink?" And like the Dhakkan that I was, I said, "I don't drink." And they just fell in love with me. I was the star of the evening. And as you may have guessed, I drank the most that day or night till late in the morning. Therein started my journey to become an original. And now, 35 years later, I have started 3 businesses in my life. And each business has been at least 10 years before their time. So let me share some ideas or some things that most of us get around to subscribing in our lives. So आपने सुना होगा लोगों को बोलते हुए कि I am stressed out. मेरे से ना काम नहीं हो रहा. I can't focus on work and I'm not producing any results because I'm stressed. So let me share another viewpoint. The times in your life when you have or any normal person has ever performed in his life has always been under high pressure. So to say, high stress. Nobody in the history of mankind has ever done something extraordinary in ordinary circumstances. Ordinary circumstances will always produce ordinary results. In fact, most of us instinctively wait for stress to happen. Example देता हूं कि जब तक टीचर बोलती है 2 हफ्ते बाद असाइनमेंट देना है, 2 पूरे हफ्ते हैं और हम कुछ नहीं करते. जिस दिन असाइनमेंट सबमिट करना होगा ना, प्रेशर होगा, स्ट्रेस होगा, उस दिन काम करना शुरू करते हैं और मैजिकली अगले दिन तक असाइनमेंट सबमिटेड. जब टेस्ट्स होते हैं पूरा समय मिलता है बच्चों को, कोई भी कुछ भी नहीं करता, पार्टी चल रही है. And just before the test, they pick up their books, they look at the syllabus, and yet they carry through with all of this. The same science applies to business owners. हम लोग वेट करते हैं कि टेंडर की टाइमलाइन क्या है. आज शाम को 5 बजे टेंडर सबमिट करना है तो दोपहर को काम शुरू होगा. अगर साल के टैक्स रिटर्न सबमिट करने हैं तो मतलब लास्ट वीक ऑफ मार्च में ही काम शुरू होगा. वी वेट फॉर स्ट्रेस. Why? Because it brings out the best. Stress is the best time of our lives. It is when you and me perform at peak performance. It is always the best. Now that you have another viewpoint on stress, how about redefining and saying, stress is the best time of my life. Stress is what brings out the most in me.
And I am so happy that now I will be stressed. Instead of saying, I'm stressed and I can't work, man. There is another thing which I have not understood conventionally. It's called work-life balance. And we struggle with work-life balance all our lives because work-life balance, as I say it, is a myth. It doesn't exist. So let's look at what we really do in our lives. At work, we are thinking of the beach. And when we are sitting on the beach, we are working, thinking work में क्या हो रहा है. और बीवी बच्चे बीच पे खेल रहे हैं और बिजनेस का मालिक फोन पे चिपका हुआ है. And then your wife tells you, अगर यही करना था तो आए क्यों थे? So, at work, you're thinking about your personal lives. And when you're sitting on the dining table with your children, with your wife and family, आपकी ना कानों से टू डू लिस्ट निकल रही होती है. आज क्या रह गया, कल क्या करना है. How about creating a new paradigm which says work at work and play at play. When you work, whether it is 12 hours a day, 6 days a week, in continuation, you do the damn work and you finish it. And don't look at the watch that I've been working 14 hours. So what? You work 14 hours because you work 14 hours. Love it because you are working. Make the most out of it. And then when you play, you go out and play like there's no tomorrow. Switch off your phone, to hell with the work. And make sure that by the time you come out of it, you come out like the movie The Hangover. पता ही नहीं लगा कि हुआ क्या. Over the years, I have cultivated an amazing habit that जब तक मैं बाहर होता हूँ और मैं काम पे होता हूँ तो मैं काम करता हूँ, full on काम करता हूँ. और जैसे ही मैं घर में घुसता हूँ मेरा दिमाग बंद हो जाता है. मैं फ़ोन साइड कर देता हूँ, चार्ज पे लगा देता हूँ, and I shut my phone down. And I shut everything on the work front down. No work. And this instinctively starts only after the next day morning when I've had a bath. नहाने के बाद ये चालू होता है. So much so that my wife doesn't let me have a bath on Sundays. कि अगर ये नहा लेगा तो अभी निकल जाएगा और काम करने लग जाएगा. All my students, I have told them, and miraculously they have trusted me. They have deleted everything from the phone. No Facebook, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn, no social media. Phone without social media. Imagine what a beautiful thing. I always try my best, and I do it, that जब मैं घर से बाहर निकलता हूँ on a personal dinner, friends, anything, I don't even take my phone with me. I leave it at home. And I invite you to try it once, twice, thrice. It is the best freedom of your life. There will always be somebody around you who has a phone. घर वालों को उसका नंबर दे देना, because उनको नहीं तो वो क्या कहते हैं, उनकी आत्मा बाहर निकल जाती है. And इंग्लिश में इसको कहते हैं out of body experience. So, when you work, don't let play stop you. When you play, don't let work stop you. How about creating these two boundaries and sticking to it? There is another concept which I fail to understand, and it is called retirement. लोग पूरी जिंदगी मेहनत करते हैं और काम करते हैं ताकि एक दिन वो रिटायर कर जाएं और enjoy करें. So there is a work life and there is a retirement life where they want to enjoy. And do you want to see what happens if you work all your life? After that you retire? So this is what happens to you. While what should be happening to you is this. This is what your life should be looking like. This is the myth of retirement. It is actually a myth. I am 53. I have one generation above me, touch wood,
very active. And do you know what is their biggest challenge after retirement? And see whether it resonates for you. उनको मालूम ही नहीं अपने समय का क्या करें. They are trying to do things just to fill up their time. They don't know what to do with themselves. So that is the biggest challenge that an active person throughout his life, as soon as he gets retired, he just doesn't know what to do. And quite often, बिस्तर पकड़ लेते हैं. So, people dream of retirement, and after retirement, they have so much of time, they don't know what to do. I have created a truth in my life. I will work till the last day of my life. 4 vacations, each of 10 to 15 days each. 10-15 दिन के 4 छुट्टियां हर 3 महीने में लेनी है. पहली छुट्टी माँ बाप बीवी बच्चों के साथ, जबकि माँ बाप डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है. ये नहीं कि माँ बाप बीवी बच्चों के साथ छुट्टी लेके वेगस ले जा रहे हो उनको तिरुपति जाना है, तिरुपति जाएंगे. दूसरी छुट्टी बीवी बच्चों के साथ, बच्चे डिसाइड करेंगे. तीसरी छुट्टी आप और आपकी बीवी 15 दिन, नो फोन, नो लैपटॉप, नो वर्क, जस्ट बी विद योर स्पाउस. और अगर आप ये 3 मैनेज कर लेते हो तो चौथी छुट्टी आपको मिल जाएगी कि 15 दिन अपने दोस्तों के साथ. और अगर दोस्तों के साथ जाते हो तो फर्क ही नहीं पड़ता कहां जाओ. Nobody has to decide. हर साल मैं 6 से 8 छुट्टियां लेता हूं. अभी दिसंबर में जा रहा हूं. This is my 7th vacation this year. I have a very, very, very hectic schedule, and it does not matter. It does not matter. Just trust me. I build my work life around my retirement. What do you want to do after you retire? Make a list of these are the things that I want to do after I retire. क्या करोगे? ट्रैवल करोगे? लिखो कहाँ ट्रैवल करना है. नेटफ्लिक्स देखना है, बिंज वॉचिंग करनी है, करो. जितनी करनी है करो. Write down all those things. What I'm inviting you to do is retire while you work. Next is now. You don't retire at 70, 75 or 80. Does not work. Retire now. Life is now. Do everything you want to do now. There is another very curious thing which I can't relate to. मेरे को ना समझ में ही नहीं आती. लोग कहते हैं बिजनेस करना एक स्ट्रगल है, हार्ड वर्क है. And then they tell me another thing which I don't understand. They say जिंदगी में या तो समय होता है या पैसा होता है, दोनों साथ में नहीं मिलते. फिर वो पूरी कहानी सुनाते हैं. Most of us, we start a business thinking that the business will give us the dream life that we aspire to. Unfortunately, the way we do business, over a period of time, the business which was supposed to enrich our life becomes the very source of draining the life that we have. It becomes the center part of our lives. It takes over our lives. We neglect our family, we neglect our children, we neglect our friends. हमारी तो गिनती आती ही नहीं है कि हमको क्या चाहिए जिंदगी में. पता ही नहीं लगता कि बच्चे कब बड़े हो गए और कब निकल गए, और हम ऐसे ही बैठे रह जाते हैं. कई बार तो ऐसा लगता है कि आत्मा बेच रखी है. And this is why we come across this term which says कि भाई सुन, जब टाइम था ना पैसे नहीं थे, अब पैसा आ गया मगर टाइम चला गया. तो टाइम चला जाता है. बिल्कुल झूठ. आपको ये बड़े बड़े क्लबों में वो 18 गड्ढों का जो गेम है, वो कौन खेल रहा है? गोल्फ हफ्ते में 3 बार. लेबरर. These are rich people who are lounging in clubs. Why? Because these people have figured out what you and me are not figuring out, what we struggle with. First, you earn the money. They stop at that. They don't understand the second part, which is more important than earning the money. That second, you have to earn the time. Time will not come to you.
यू हैव टू अर्न इट। उतनी ही मेहनत लगेगी जितना पैसा कमाने में लगी, समय कमाने में लगती है। समय कमाओ, पैसा तो कमाओ ही, समय भी कमाओ। बेसिकली अ बिजनेस हैज टू बी समथिंग विच इज स्केलेबल। तो सबसे पहले आई अज्यूम कि अब समझ में आ गया कि पैसा और टाइम साथ में जाता है, वरना ये इतने अमीर लोग इतना सारे ऐश नहीं कर रहे होते। इज दैट डन? आफ्टर दैट व्हेन वी से कि बिजनेस से पैसा और टाइम दोनों कमाना है, तो द थ्री थिंग्स हैव टू बी स्केलेबल। स्केलेबल क्या होता है? इन द वेरी रॉ फॉर्म, बेसिक में स्केलेबिलिटी होती है जब धंधा आपके बिना चले। अगर धंधा आपकी वजह से चल रहा है, एक तो आप पैसा नहीं कमाओगे, बड़ा पैसा, छोटा मोटा तो है ही, यहां से ग्रो करोगे, यहां पहुंचोगे और यहां स्टैग्नेट कर जाओगे। एक लेवल पे जाके स्टैग्नेट कर जाओगे, बिकॉज इससे ज्यादा समय नहीं है आपके पास। स्केलेबल बिजनेस बनाओ। थ्री थिंग्स स्केलेबल। वन, ऑपरेशंस हैव टू बी स्केलेबल। सबसे दो गलतियां करते हैं इसमें। एक, बिजनेस मालिक सोचता है सारा काम मैं करूंगा। दूसरा, गुड मैन पावर कैन रन द बिजनेस। गलत। गुड मैन पावर हैज नेवर बीन एबल टू रन द बिजनेस। सिस्टम्स रन द बिजनेस, पीपल रन द सिस्टम्स। दैट्स हाउ अ बिजनेस इज रन। पहले ऑपरेशन स्केलेबल करो, उसके बाद सेल्स एंड मार्केटिंग स्केलेबल करो। और अगर ऑपरेशंस और स्केलेबल बिजनेस एंड ऑपरेशंस और सेल्स दोनों स्केलेबल कर लिया, तीसरा पिलर होता है कैपिटल। कैपिटल को स्केलेबल करना है। पहली दो चीजें हो गई तो तीसरी चीज इज अ गिवन। इस समय बरस रहा है इंडिया में। न्यूज़पेपर खोलता हूं, इकोनॉमिक टाइम्स, न्यूज नहीं, आईपीओ दिख रहे हैं, सिर्फ आईपीओ दिख रहे हैं। So capital is the easiest to scale if you manage to scale the first two things. So चार चीजें जो मैंने आपको बताई। एक, stress is the best time of your life. Second, work-life balance is a myth. आप जब काम करते हो काम करो, जब ऐश करते हो ऐश करो। तीसरा, retire now. All the things you want to do, you need a body, you need to enjoy it, you need to be able to do all of that. Chauथा, business is not a struggle. There is a joy in doing business. It's called the joy of doing business. Money and time is not mutually exclusive. दोनों इकट्ठा चाहिए, एक नहीं चाहिए, दोनों चाहिए। And now that you have heard me, do you think you are an original or do you think you are a subscriber? So, nobody chooses to be a subscriber, but you have to choose to be an original. And being an original is an acquired skill set. And I leave you with this question. Do you want to be an original or do you want to be a subscriber?